Hello, friends. Myself, Deepak Gupta. I'm a UGC qualified professor, and we are having this session on the different phases in which Indian economy has made the growth. That is, we will summarize the journey of the growth of the Indian economy. So, in this part, we will classify this growth of Indian economy into primarily four periods. Ideally, when we see any book, then they normally take it in a three-way period. But it is better in this current scenario of GST that we understand this growth journey into four phases. The first phase has to be the pre-independence era because, as you all know, we were not free. So we can also write it the colonial era. We can say this was one of the worst scenario for Indian economy because you were governed by someone who has no objective to make you develop. Their primary objective was to make their queen rich. So their primary objective was to take away whatever they can from the Indian economy. Then the second era was post-independence. But this post-independence era is going on till now. So it has to be a period from 1950 to 1990. Why we are writing 1950? Because though we got the independence in 1947, but we became a republic through constitution uh, after 1947. And why we are closing it to 1990? Because it was, we can say, it was a Nehruvian economy era where all the economic policies were directly or indirectly affected by the Nehru family. Then, after the demise of Rajiv Gandhi, we had a new PM which had a fresh word LPG, liberalization, privatization, and globalization. To someone to make a 100% application in the economy. So we implemented GST in 2017, and before that, in 2016, we had this demonetization. We are not discussing what's bad and what's good, but they are the landmark judgments for the Indian economy. And I will also say that direct benefit transfer of the subsidy through Jan Dhan Yojana account were also the game changer for Indian economy because it stopped, or I should say, it miraculously reduced the leakage of subsidy in corruption. So, primarily, we are discussing these four periods, these four phases of Indian economic development. Now, in this first phase, we can say as such, we being optimistic are being shy to say that there was nil in economic development in the era of British, but still it was a black era in the case of Indian economy because we were a cash crop nation. We understand the word cash crop, like, or I should say, this cash crop word has two implications. So British made us cash crop nation, but actually we were food crop nation. So what British did, they changed our agricultural system in primarily two ways. There are many reasons, but primary aspect is two. We were growing wheats, we were growing rice, and they were fulfilling the food needs of the farmers. The farmers were not hungry. Bhuka nahi the farmer. But what the British wanted, they wanted something which is useful for their industry. So they wanted the Indian farmer to grow the raw material which will be needed for the industry in the colonial places of the British. So, for example, they forced the Indian farmer to grow cotton. Now, cotton is not a food crop. Farmer cannot eat it. So, if a farmer is forced directly or indirectly by the Britishers to grow cotton, then he needs to have a buyer to sell it. And when he sells it, because that seller will give the money, and when the farmer gets the money, then his hunger will be
completed और उसकी भूख शांत हो जाएगी. But the problem was that the buyer was the British government, and they did not pay. उन्होंने ढंग से पे नहीं किया. They didn't pay requisite amount. जितनी पैसे की जरूरत थी, जितनी उस क्रॉप की वर्थ थी, वो उन्होंने पे नहीं किया. So what happened? They crushed the farmers by forcing them to shift from food crop to cash crop like cotton. And because they were the only buyers, or they compelled them because there were no industry. So there were no industry. The only industry in the period of British was handicraft industry. And what British does? They crushed this handicraft industry, and no further industries were set up. So there was a period of deindustrialization. So basically, whatever the industries were, like the handicraft industry, that was not supported, that was crushed, and no other support was given to set up any new industry. What I'm saying कि फार्मर के पास फूड क्रॉप उगाता था, खाता था, कुछ बेच देता था, उसका अपना काम चल रहा था. तो उन्होंने क्या करा कि फार्मर को फोर्स किया, कंपेल किया कि वो कैश क्रॉप, फूड क्रॉप को छोड़े कैश क्रॉप पे जाए. अब इस कैश क्रॉप को वो फार्मर बेच के कमा सकता था, लेकिन इंडस्ट्री कोई थी नहीं. तो ब्रिटिशर्स ने खुद ही उसको बाय किया और उसके प्रॉपर प्राइस पे किए नहीं. तो फार्मर भूख से भी मरा, क्योंकि उसके पास फूड था नहीं, और अपनी जो क्रॉप थी, उस क्रॉप का पूरा प्रॉपर प्राइस मिला नहीं. तो देयर वाज ह्यूज पॉवर्टी अमॉन्ग फार्मर. तो हुआ क्या कि आपकी जो एग्री इकोनॉमी थी, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी जो प्रोफेशंस थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे. तो एग्रीकल्चरिस्ट भूखा हो गया, और इंडस्ट्री सेटअप हुई नहीं, नई इंडस्ट्री बनी नहीं, जो पुरानी इंडस्ट्री थी खत्म हो गई. तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई. तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, they were the biggest gift of British to Indian economy till they were forced out of the country. ठीक. Secondly, what they did, they created the concept of landlords, जिन्हें हम लोग जमींदार कहते हैं, है ना. Now, what that landlords did, कि they were the big owners, they owned big pieces of land. So there were huge differences in land ownership, huge differences in land ownership. तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनके पास जमीन थी ही नहीं, बहुतों के पास बहुत कम थी, और कुछ के पास ह्यूमंगस पीस ऑफ लैंड था. तो जिनके पास बहुत ज्यादा पीस ऑफ लैंड थे, दे वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश. तो इट इन अ वे हेल्प्ड the British to force the farmers through these landlords to do what they wanted. For example, through these landlords, they forced the farmers to grow the cash crops. So in a way, what we needed, that this landlord system was a huge blow which crushed the agrarian economy of the country. So basically, in the era of British, there was no work. And some people say that they built infrastructure. For example, they built railways. So whatever the infrastructure was built by the British, that was not for the development of the country, that was primarily just to ship out, just to ship out Indian resources out of the country, just to ship out the Indian resources out of the country. So if somehow some people are interested in reading, then whatever the rail routes were so planned that they had to lead to the ports. And the nearest port towards England was in Gujarat and Bombay. So all rail routes were from those areas which were having rich raw materials, which were needed by the British, and they had to be shipped to the ports in Gujarat and Mumbai, that is west of India, from where they can be shipped towards the UK, Europe. So whatever the infrastructure was built, that was not for the development of the country, and that is where the primary development was just, अगर रेलवे की बात करें, तो वो सिर्फ उनकी रॉ मटेरियल के मूवमेंट के लिए था.
और अगर रोड्स की बात करें तो उनके रोड्स की मूवमेंट सिर्फ इन्फेंट्री, उनकी मिलिट्री की मूवमेंट के लिए था। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर अच्छी होनी चाहिए, वो अंग्रेजों ने खत्म कर दी। इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, वो अंग्रेजों ने खत्म कर दी, या कहो जो थी वो खत्म कर दी, नई लगाई नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और रेलवेज, वो उन्होंने बनाया सिर्फ अपने फायदे के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए नहीं। तो इन अ वे वी कैन से दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश टू द इंडियन इकोनॉमी वाज nil. They did nothing for the country. That is why when we got independence in 1947 and we became a republic in 1950 through our constitution, then our government has a humongous task of getting the Indian economy on the right path of development. And that's how we had to move on. And the first step that was taken by that then PM Nehru, that they created a vision plan. They identified the need of a vision plan so that if we have a vision, then we can follow that path. So they use this word 5 year plans. So primary, first and foremost primary work that was done by the first elected government, that they created a concept of planning commission. The first of official chairman was the PM himself, and that planning commission creates a vision for every 5 years, that what has to be done for the development of the country. And then each department of the Indian government has to work as per the 5 year plan. So the basic thing is that we wanted to improve the agriculture, and the biggest hurdle was that there was dissimilarity in the land ownership. So we created land reforms, and through those land reforms, so friends, if you are listening, if you are making it understand, or if I'm able to do that, you will be able to understand that we were in a kind of depth, or I should say गड्ढे में, अंग्रेजों में गड्ढे में छोड़ के चले गए थे। तो अब अंग्रेजों ने सिर्फ शोषण नहीं करा, फिजिकल इकोनॉमिक शोषण भी करा। वो कंट्री को एकदम गड्ढे में धकेल के चले गए। उन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेज इस कंट्री से बाहर सोर्स आउट कर लिए, और आपको एक तरह से जो कंट्री के रिसोर्स थे उनको बहुत हद तक लूटने के बावजूद भी जो भी रिसोर्स बचे हुए थे वो भी काफी थे। बट हमें अपनी लीडरशिप के साथ उन रिसोर्स को यूज करके फ्यूचर में और ग्रोथ पे जाना। तो आप ये जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आप ये बात समझ पाओगे स्टूडेंट्स कि उस टाइम की गवर्नमेंट के पास कितना टफ टास्क था। बिकॉज आपको कंट्री की जो सबसे प्रॉब्लम है पावर्टी, वो हटानी है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, उसके अलावा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, एजुकेशन पे कुछ काम नहीं हुआ था, एजुकेशन पे काम करना शुरू करना है। और इतने साल तक अंग्रेजों के पास रहने के बाद आपको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आपको गवर्नेंस के बारे में भी कुछ नहीं पता था। सो if we believe that they have this governance experience or whatever, they were intelligent to do that, but still 200 साल की 200 250 साल के अंग्रेजों की लूट के बाद कंट्री को राइट पाथ पे लेकर आना, इट विल टेक टाइम। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट हम लोग सारे काम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, हमें की फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो जो की फैक्टर आइडेंटिफाई किए गए वो प्राइमरली जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि या तो एग्रीकल्चर पे था, तो हमने किसानों को सपोर्ट करना शुरू करा। और हमने उसके लिए क्या सोचा कि अगर आपको किसानों को सपोर्ट करना है तो जो ये लैंड ओनरशिप के अंदर डिफरेंसेस हैं इनको हटाइए। तो हमने लैंड रिफॉर्म्स करे, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया। और जमींदारी सिस्टम खत्म करने से यानी कि एक तरह से लैंड सीलिंग लगा दी कि एक बंदे के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं पॉसिबल है। सो जो लैंड की ओनरशिप के डिफॉर्मिटीज थी, किसी पे बहुत ज्यादा किसी पे बहुत कम, और जमानती सिस्टम खत्म करने से काफी जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा थी उनसे ले ली गई, और जिनके पास नहीं थी या बहुत कम थी उनको दे दी गई। तो लैंड की ओनरशिप में यूनिवर्सलिटी आ गई। दूसरा, हमने अब ये फोर्स करना बंद कर दिया कि आपको कैश क्रॉप लेनी है या फूड क्रॉप लेनी है। हमने उन्हें फ्री हैंड दिया कि आपको जो उगाना है वो उगाइए, जो आपकी चॉइस है वो उगाइए। तो कंपल्शन बंद हो गया। थर्डली, किसान तब ग्रो करेगा जब उसकी फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी के लिए उसे रिसोर्सेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक सपोर्ट चाहिए। तो अंग्रेजों ने 200 साल तक कोई सपोर्ट नहीं किया। तो हमारा फोकस ये था कि हम उन्हें अच्छी क्वालिटी के सीड्स दें,
अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज दें, पेस्टिसाइड्स दें, हाँ, जिससे कि वो उनको यूज करके अपनी जो आउटपुट है वो बढ़ा सके. So what that five planning commission did, that they identified these key factors. So each subsequent planning commission, the first planning commission was primarily targeted towards agriculture. Then second planning commission was primarily targeted towards industrialization. So one way or the other, each 5 year plan targeted a special sector of the economy which needs their primary attention. So somehow they tried to identify the problem and they started this journey or they started moving the wheel of the growth of the Indian economy. So we cannot say that they did nothing and we cannot say that almost all was done, but still we started moving in the right direction. But that colonial mindset of 200 years was not solved. So till 1990, we started on the right path. We did certain good things, but that colonial mindset of old times was not shrugged off, and that, for example, taxation laws and so many labor laws were still lingering on that were same in the colonial times, and that hampered or that slowed down the impetus with which the Indian economy should have grown. That is why I said that this period of the second phase from 1950 to 1990, which we normally say Nehruvian economy, whosoever was the PM, first of all, he followed the same mentality with which the Nehru worked, and secondly, it was also marred by 1962, 1965, and 1971 wars. So these three wars also impacted the growth of our economy. So this 1990, when Nasimha Rao came in 1991, he identified that in this second phase from 1950 to 1990, the growth of the Indian economy, the wheel was slow. Wheel slow क्यों था? Wheel slow क्यों था? Because हमें एक्सटर्नल फंडिंग नहीं मिल रही. हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया. इकोनॉमी ओपन का मतलब है कि हम इंडिया से बाहर की कंट्री के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शंस कंप्लीटली नहीं कर रहे. तो आप नोटिस करें, अंग्रेजों के टाइम पर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा था और कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था, जबकि हर कंट्री चाहती है इससे उल्टा. तो 1950 से लेकर 1990 तक हमारी इकोनॉमी ने फ्रेंड सबसे बड़ा काम क्या करना शुरू करा कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बंद करा. और अभी ट्राइड कि जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ है उसकी इंडस्ट्री सेटअप करें और उसे अपने यहाँ बनाए. अपने यहाँ बनाएंगे तो उसका इंपोर्ट बंद हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजों के टाइम पर कारें सब बाहर से आ रही थी, लेकिन 50 के बाद एचएम, हिंदुस्तान मोटर्स और फिएट जैसी कंपनियों ने इंडिया में आकर कारें बनानी शुरू करी. चाहे वो जैसे मर्जी बनानी शुरू करी हो, लेकिन एम्बेसडर और फिएट जैसी गाड़ी आनी शुरू हुई. और 1980s में जापानीज कंपनी सुजुकी भी इंडिया में आनी शुरू हुई. तो वन वे और दी अदर वी ट्राइड टू मेक capital goods in India so that the import of capital goods is reduced. बट स्टिल ये बहुत बड़ा पॉइंट नोटिस करने के लिए कि जो थ्रस्ट था वो था बट कम था, बिकॉज आपकी इकोनॉमी में रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे. इस पीरियड के अंदर लाइसेंस राज बहुत ज्यादा था. कुछ इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी. अब कैटेगरी ए की इंडस्ट्री जैसे कि डिफेंस, ये वो इंडस्ट्री थी जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री सेटअप कर सकती थी. नाउ दैट शुड नॉट हैव बीन डन, but still they said this is crucial for the country, private sector we cannot allow. Now B sector was that you can do, but you have to get the permission from the government, and C was free for the public. तो कैटेगरी सी की तो फ्री की ही थी, जिनमें आप गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. बी में आप लेकर आ गए परमिशन. परमिशन को क्या बोला गया? लाइसेंस. तो द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम due to which industrialization was not happening and the foreign companies were not coming to India, funding नहीं आ रही थी इंडिया में, that was this humongous लाइसेंस राज. लाइसेंस राज का बहुत बड़ा इफेक्ट था, मेजर इफेक्ट था कि आपको हर चीज में लाइसेंस चाहिए. उसके कारण परमिशन स्लो हो गई, करप्शन आना शुरू हो गया. तो व्हाट
was primarily done in the period from 1991 till 2014, and till now, what is happening? That we are removing these restrictions. ये जो license राज है, it is on the verge of collapse. We are focusing on ease of doing business. We are having the concept of direct transfers, or I should say direct permissions. Yeah, we should say automatic permissions, automatic route. And these are happening, these are helping the money flow to India from the foreign countries. So we use the word FDI, foreign direct investment. So in this period, we use this three-pronged strategy of LPG. दैट इज जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन करो. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सेकंड ग्रोथ में रही, सेकंड फेज में रही, कि आपने प्राइवेट कॉरपोरेट्स की पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री में बहुत कम करी या उनको सपोर्ट नहीं किया. या तो वो हेम्पर्ड रहे, उनके पास फंड्स नहीं थे तो गवर्नमेंट ने बैंकों के थ्रू उन्हें लोन सपोर्ट नहीं करा, या जो लोग रेडी भी थे तो उनको इतना ज्यादा लाइसेंसिंग में फंस गए वो लोग कि लाइसेंस के डर के मारे वो दे वर नॉट इंटरेस्टेड to set up the industry. So what was the done? That through liberalization we try to remove this license raj. तो परमिशंस को हटाया गया, ऑटोमेटिक रूट से परमिशन देनी शुरू कर दी गई. थ्रू प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर भी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया. एंड थ्रू ग्लोबलाइजेशन वी ट्राइड कि बाहर की इंडस्ट्री हमारे यहाँ सेटअप करे और हम बाहर जाके सेटअप करें, यानी कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाएं जिससे कि फ्री मूवमेंट ऑफ मनी होना शुरू हो जाए. तो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में फ्री फ्लो ऑफ मनी होना शुरू हो जाए, फ्री फ्लो ऑफ मनी होना शुरू हो जाए. So this LPG was initiated in this third phase in 1991 under the leadership of PV Narasimha Rao through then Prime Minister Manmohan Singh. And this LPG policy is still being carried on. And what primary factors were done after 2014? That in these periods, India was having primarily two kinds of taxation system: direct tax and indirect tax. There were primarily three kinds of direct taxes, that is tax on your income, that is income tax on your wealth, that is wealth tax, and tax on your gift, that is gift tax. So in the short period between 1999 to 2004, when Vajpayee was the PM, in that short period of 4 or 5 years, he abolished the gift tax. So we still had two direct taxes, income tax and wealth tax. So what was done after 2014? Gift tax was also abolished. So we had only one direct tax, that is income tax. So it is like income tax included in itself the laws of gift tax and wealth tax. तो गिफ्ट टैक्स के प्रोविजंस को अबॉलिश कर दिया गया और उसको कॉन्सेप्चुअली इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया. फॉर एग्जांपल 50,000 तक के गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट हैं और उसके ऊपर के गिफ्ट्स को इनकम मानकर टैक्स लगा दिया गया. तो इसको इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया. Similarly, wealth tax was a tax on the super rich. That super rich tax, which was basically on the holding of specific assets, was abolished, and there was a special surcharge and cess that was levied on the super rich people with having high income. So their impact, I'm saying their provisions were waived off, but their impact was included in the Income Tax Act. The Income Tax Act was amended again and again. So that was one of the major thing to happen, that taxation system was streamlined. Taxation system was streamlined. And secondly, what happened, that before 2018 2014 we had various indirect taxes. For example, on the sale of goods we have sales tax, which some people also use the word VAT. On intangible services we had service tax. On manufacturing we have excise duty, excise tax. Similarly, when you
go to see a movie, then you had this entertainment tax. When you go to a five-star hotel, then you paid that luxury tax. When you import the goods, then you pay customs. And there were so many blah blah indirect taxes which a person had to pay. So this multiplicity of taxation was causing so much trouble for the public. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप और मेरे जैसे लोग जो पब्लिक हैं, हमें कॉमन मैन हैं, हाँ, हमें शॉपिंग करने गए सेल टैक्स दे दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाया सर्विस टैक्स पे कर दिया, कोई माल खरीद रहे हैं पता ही नहीं कि उस पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, फाइव स्टार होटल में गए तो लग्जरी टैक्स दे दिया. तो वी वर जस्ट फेड अप विद सो मेनी टैक्सेस. तो व्हाट वाज डन दैट in whole of country India, a unified indirect tax by the name of GST was created. So I should say that sales tax, service tax, excise, entertainment tax, luxury tax, more or less all these taxes were abolished, except excise was being payable on primarily two items, that is alcohol. I'm saying primarily. There are one or two more items, but primarily alcohol and petrol. Petrol that is including diesel. And in addition, when there is a flow of goods in or out of India, that is either there is import of goods or there are export of goods, then we had this concept of customs. So more or less, what was primarily being planned after 1990, it was planned, it was conceptualized to be done after 1990 by Manmohan Singh and Narasimha Rao, but that was not being made into existence through various reasons, which are political, and I don't want to involve into those things. But that was effectively being brought into the existence to the benefit of people like you and me all. That if we are living in India, now we are primarily giving only two taxes. When we earn more, then we have to pay tax on our income, subject to that your income is more than a minimum threshold limit. And when you are buying or consuming, and you are buying from a particular dealer with a turnover of more than 20 lakhs, so it is not like that you go from a to go to a normal vendor. घर के पास कोई बंदा चाउमीन बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, आप उसके पास गए, आप उसको जीएसटी नहीं पे कर रहे. लेकिन अगर आप किसी बड़े एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में गए, किसी बड़े डीलर के पास गए, तो आपको जीएसटी पे करना है. तो हमें एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम मिल गया जीएसटी. और इंडिया से बाहर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए कस्टम्स लगाया गया. तो कस्टम्स बेसिकली टैक्स नहीं है, अगर देखा जाए तो ये एक तरह का टूल है ये कंट्रोल करने के लिए कि क्या इंडिया में आए. तो वी शुड इंपोर्ट नॉट एवरीथिंग, वी शुड इंपोर्ट व्हाट वी नीड. So because India is a member of World Trade Organization, so we cannot ban the import of goods. But the things which we don't want to import, for example, crackers, for example, e-rickshaw, for example, toys, they were made in so much quantity in China that they are just putting the dump there. And so चाइना के लिए वो कूड़ा था, चाइना उसको इंडिया में बेच रहा था, तो बेसिकली डंप कर रहा था यहाँ पे. और उस चक्कर में जो इंडिया की इंडस्ट्री थी वो खत्म हो रही थी. आप और मेरे ऐसे लोग, हमारे को रिलेशन में लोग जो छोटी मोटी इंडस्ट्री चला रहे हैं, चाइना के चक्कर में सारा माल आ रहा था और हम लोग वो माल सस्ता खरीद लेते थे और यहाँ के लोगों की इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो रही थी. तो व्हाट हैपन कि गवर्नमेंट ने इस कस्टम ड्यूटी को टूल की तरह इंपोर्ट किया, या सॉरी टूल की तरह यूज किया कि इस तरह के आइटम जिसकी मुझे जरूरत नहीं है उसके इंपोर्ट को स्टॉप करने की जगह उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इतनी ज्यादा लगा दी जाएगी कि कस्टम ड्यूटी लगने से आइटम इतने महंगे हो जाएंगे कि ये एट पार विद द इंडियन प्रोडक्ट्स आ जाएंगे. तो ये प्रोडक्ट्स बाहर के इंपोर्ट होके इंडियन इंडस्ट्री को खत्म नहीं करेंगे. सिमिलरली एक्सपोर्ट करने पे इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन अगर तो वी वांट कि हर आदमी एक्सपोर्ट करे. एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है कि एक्सपोर्ट करो, फॉरेन एक्सचेंज लेकर आओ और मेरे से बेनिफिट लो. तो टैक्स या ड्यूटी तो लगती नहीं थी. तो नॉर्मली कस्टम्स की एप्लीकेशन इंपोर्ट पे होती है, एक्सपोर्ट पे कस्टम नहीं लगता. बट कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें
जहां पर इंडिया की जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे कभी कभी प्याज, अब इंडिया प्याज का एक्सपोर्टर है, इंडिया टमाटर का एक्सपोर्टर है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं, जैसे आप देखोगे कि गर्मियों में प्याज बहुत महंगी हो जाती है, तो कुछ कभी कुछ टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। तो वो कुछ ऐसी चीज, दालें कभी बहुत सस्ती हो गई, कभी बहुत महंगी हो गई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनकी टेम्परेरी शॉर्टेज होती है। नॉर्मली हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं इंडिया में, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ ऐसे आइटम्स है जो टेम्परेरी शॉर्टेज में है, और हम उन्हें अगर उस टाइम एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो इंडियन कंज्यूमर है, आप और मैं, हमारा घर का बजट बढ़ जाएगा और हम गाली देंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट करेक्टिव एक्शन लेती है और ऐसे आइटम्स के एक्सपोर्ट को रोकने की जगह उन पे ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगा देती है। कस्टम ड्यूटी लगने से वो आइटम महंगे हो जाते हैं, तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो अपने आप ही एक तरीके से रुक जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में जो ये चौथा फेज मैंने शुरू किया आफ्टर 2014, ये प्राइमरली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन लॉज हुआ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन लॉज हुआ। डायरेक्ट टैक्सेस मल्टीपल थे, अब एक ही डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अब सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी। और इंडिया में कौन से गुड्स आए और कौन से गुड्स इंडिया से बाहर जाए, इसको रेगुलेट करने के लिए, मैंने बोला रेगुलेट करने के लिए, बैन करने के लिए नहीं, बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीए एंड अंटिल इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यू कैन नॉट बैन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सो दैट इज वाई क्या आइटम इंडिया में आए, क्या इंपोर्ट हो क्या एक्सपोर्ट हो, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी को टूल की तरह यूज करती है। इस तरह से बेनिफिट आपको और मेरा ही है, और इन एडिशन गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल जाती है, इसका बर्डन आपके और मेरे पास नहीं। So I hope this, and we should also be closing on this comment, that the growth of every economy is a continuous journey. We cannot say कि journey खत्म हो गई. It's a continuous journey. It is a going process. It will always be moving on. It will always be growing. At the moment, we have around 5 trillion economy to 2 or 3 trillion. We are having a target of 5 trillion. We will go to 10 trillion. It's a growing journey. It will always go on. But till now, we can say that we are trying to classify the growth of Indian economy in four phases, because they had this character of certain major amendments. So these, as I started earlier, that these four phases are to look out for, and we hope there will be a fifth phase that will also speed up the growth of Indian economy. So I can summarize it this way कि फर्स्ट फेज प्री इंडिपेंडेंस एरा, कॉलोनियल एरा में जो भी अच्छी इकोनॉमी थी, अंग्रेज ठप करके चले गए। सेकंड फेज में हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने उन्हें व्हील को मूव करना शुरू करा, बट वो व्हील ठीक से मूव नहीं कर पाए, इट नीडेड ऑयलिंग। कुछ आपके लूप होल्स थे पॉलिसीज में, कुछ आपके पुराने रिसोर्सेज की कमी थी, वट एवर द रीजंस आर, then it the oiling was needed, push was needed, if we use the word, if we use the funds from the outside, and that is why Manmohan Singh and Narasimha Rao created this concept of LPG, and it involved foreign money and the private corporate money, and that just accelerated the growth of Indian economy, and that is why Indian economy has grown in the last 20 years. And after 2014, the one of the most neglected era that was not taken care of and which was crucial for the growth of Indian economy was the simplification of tax laws, and that that simplification has been undertaken by this Modi government after 2014, where we have a simplified, unified direct tax and indirect direct system, and we hope this journey of Indian growth will keep on moving, and this field wheel will move faster and faster, जिससे कि आप और हम सब लोग we will have a good life to live and a developed economy in the future for our generations to come. On this positive note, myself Deepak Gupta signing off. Thank you very much.